Everyone, welcome to this week 7 session of this problem solving session. Week 7 of this problem solving session. And today we are going to talk about pointing vectors, electromagnetic wave, and Maxwell equation. All these related, it's all these things which are related to the electrodynamics, where your electric field and magnetic field both are changing with time, and how the and what are the Maxwell's equation and how they are modified uh, from the previous equations that were there for this electrostatic. So our today's topic will be displacement current, Maxwell equation, Poynting vector, electromagnetic wave equation. All, and we will solve some questions around these topics. So I will wait for 1 or 2 more minutes so others can join. Then I will start. Okay, I will wait for 1 more minute. I think I'm audible. Okay, I think we can start now. It has been 5 minutes. So, so first thing that we have to understand is the displacement current. तो displacement current का origin क्या है और वो कैसे जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स इक्वेशन थे मैक्सवेल के आने से पहले उनको कैसे इम्प्रूव करता है। तो सबसे पहले हमें हमें पता है कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं वो है डेल डॉट ई इज इक्वल, जो मैक्सवेल के आने से पहले इक्वेशन थे वो थे डेल डॉट ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट रो, जो गॉस लॉ से आता है। दूसरा जो इक्वेशन था डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसमें इसका मतलब फिजिकल मीनिंग ये होती है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते और आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसा फील्ड होता है जो कि क्लोज्ड सोलोनॉइडल काइंड ऑफ फील्ड होता है। तो उसका डाइवर्जेंस 0 होता है, मतलब जितने क्वांटिटी में फील्ड बाहर जा रही है उतनी ही क्वांटिटी में उस भी पॉइंट पर वापस आ जा रही है। फिर तीसरा हमारे पास है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल टी। ये फेराडेज लॉ से आता है, मतलब कि अगर आपके पास एक लूप है तो अगर या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है या फिर लूप में कोई वेलोसिटी है जो एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके जो वायर्स, उस लूप के जो वायर हैं उसके एंड पर एक वोल्टेज क्रिएट होगा और वो वोल्टेज
एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करी जा सकती है। तो फैराडेज लॉ में जहाँ था कि जो मैग्नेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूसेस अ ईएमएफ। तो उसी का ये वहाँ पे वो इंटीग्रल फॉर्म था, ये उसका डिफरेंशियल फॉर्म है उसी सेम लॉ का। उसके बाद हमारे पास है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे, और ये एम्पियर्स लॉ है। तो एम्पियर्स लॉ जो कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे है, इसका मतलब, इसको अगर इंटीग्रल फॉर्म में हम देखें तो इसका मतलब होगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल जे डॉट डी टाउ। तो जे डॉट डी टाउ मतलब द होल करंट, बिकॉज जे इज अ करंट डेंसिटी, तो j into d tau will be the whole current, and b dot dl will be along uh, along the along the it it will be the okay, so it will be the area, not the area, it will be the circumference about which this uh, through which this j is passing, and that j into that area will give you the total current, because j is the current per unit area, so it's the current density per unit area. So this is the Ampere's law. अब अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अगर ये कैप इस फिगर को देखें, तो सबसे पहले एक सर्कुलर जो यहाँ पर सर्कुलर जो यहाँ पर जो सर्कल है, इस सर्कल में हम देख सकते हैं कि अगर इसको हम एक अपना एम्पीरियन लूप बनाएं, और अगर इस लूप में करंट आई फ्लो हो रही है, बैटरी क्योंकि हमने लगाई है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इस सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो होगी B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ओवर 2 पाई द रेडियस ऑफ दिस लूप। लेकिन अगर यही लूप हम ऐसे बना दें जैसे कि एक बैलून, और बलून जैसे जो नीचे से कटा हुआ है, तो हम देख रहे हैं इस वाले सरफेस से तो कोई भी करंट पास नहीं हो रही। तो ऐसा ऐसा क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो करंट जा रही है वो इस कैपेसिटर के प्लेट पर, मतलब जो चार्जेस जा रहे हैं वो कैपेसिटर के प्लेट पर इकट्ठे होते जा रहे हैं टाइम के साथ। तो हम फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो करंट के लिए सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, और अगर इस लूप जो बैलून के सरफेस पे देखें तो यह कोई करंट इनक्लोज भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये नियम है डेल क्रॉस पी इक्वल टू म्यू जीरो जे, ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस वजह से वैलिड था कि वहां पर किसी तरह का चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता था। जब आप करंट फ्लो करते थे किसी वायर में, तो वो किसी पॉइंट पर एक्यूमुलेट नहीं होता था, तो वहां पर वो हमारा लॉ वैलिड था। तो यहाँ पर ये लॉ हमारा इनवैलिड हो जाता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है। दूसरी तरह से इसको हम समझने के लिए हम थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और बताऊंगा कि आप कैसे मैथमेटिकली इस चीज को समझ सकते हो। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास जो डेल डेल क्रॉस ई जो कि फैराडे लॉ से आया है, इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, राइट, इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। और उसके बाद हमारे पास डेल क्रॉस बी जो कि ये फैराडे लॉ है, मतलब changing magnetic field will induce an electric field। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जे, जो कि है एम्पियर्स लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में। अब हमें हमें ये पता है, हमने ये वेक्टर आइडेंटिटी में ये सीखा है, मतलब वेक्टर अलजेब्रा में, कि अगर डाइवर किसी भी वेक्टर जिसका कर्ल लिया गया हो, मतलब मान लेते हैं एक वेक्टर ए है जिसका कर्ल लिया गया हो, तो अगर उसका हम डाइवर्जेंस देखें तो वो जीरो होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में बोथ
बोथ में ई एंड बी का कर्ल लिया गया है। इसका मतलब अगर हम इक्वेशन वन को दोनों तरफ डेल डॉट ई से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लें, तो हमें मिलेगा माइनस डेल डेल बी ओवर डेल टी, इक्वेशन वन। और दूसरा इक्वेशन हमें अगर दोनों तरफ, तो इसको तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी एक वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो है तो वो किसी एक दूसरे वेक्टर का कर्ल रहा होगा। तो यहाँ पर ये ई वेक्टर का कर्ल लिया है, उसके बाद हमने उसका डाइवर्जेंस लिया है, तो ये तो जीरो होगा, जैसे कि मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। और हमें पता है कि राइट हैंड साइड में जो डेल डॉट बी है ये भी जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो बोथ साइड जीरो है। तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। बट व्हाट अबाउट दिस डेल क्रॉस बी, divergence of this will be divergence of म्यू जीरो जी। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो चार्ज करंट है उसका डाइवर्जेंस नॉन जीरो भी हो सकता है, उसका डाइवर्जेंस नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये इसका डेल क्रॉस बी बी का कर्ल है, तो उसका अगर डाइवर्जेंस लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अभी ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लेफ्ट आर एच एस जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समथिंग शुड बी देयर व्हिच रिमूव्स दिस डिलेम्मा। तो और हमने पहले अभी देखा, जैसे कि इसमें लेक्चर यहाँ पर, कि यहाँ पर भी हमारे पास ये जो एम्पियर्स लॉ है वैलिड नहीं हो रहा, और हमने मैथमेटिकली भी देखा कि एम्पियर्स लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं है अगर जे स्टैटिक करंट नहीं है। तो यहाँ पर मतलब अगर ये स्टैटिक करंट होती तो जितना भी करंट एक पॉइंट से जा रहा होता उतना ही करंट वापस आता, या फिर मतलब अगर एक क्लोज लूप में हम ऐसे मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो जे है उसका डाइवर्जेंस नॉन जीरो है। डाइवर्जेंस नॉन जीरो है, इसका मतलब कि उसमें कुछ मतलब डाइवर्जेंस नॉन जीरो है, मतलब जितनी करंट आ रही है उससे ज्यादा करंट जा रही है। अब इसका यह मतलब हुआ कि हमें इसको इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना होगा, जैसे कि ये इस लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर पाए। तो मैक्सवेल ने बताया कि जो ये कैपेसिटर में ये जो चार्ज करंट यहाँ पर था, एम्पीरियन लूप में ये जो कैपेसिटर था, यहाँ पर इसमें जो चार्ज करंट, यहाँ पर कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि चार्ज सेपरेशन अपॉन द एरिया इसके बराबर होगा, मतलब वो कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर के बीच में, और ये कांस्टेंट होगा। ओके। अब हमारे पास हम एक ऐसी करंट डिफाइन कर सकते, मतलब एक ऐसी करंट डिफाइन कर सकते हैं जेडी, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अ, चूंकि ये चार्ज है, यहाँ पर अगर हम देखें ई को, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से होगा, 1/a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर
ओके ओके, यहाँ पर एक और चीज होगी जो होगी, अ, यहाँ पर पहले हम इसको अलग से लिख लेते हैं, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, where sigma was q over a, so electric field was this. So let's say that there is vacuum in between, so epsilon naught. Now, if I calculate something del E over del T, then what happens? I have d over dt, sigma over epsilon naught, and this can be written like this, q a epsilon naught. But we know that del E over del T will be del q over del q over del T 1 over a epsilon naught, and del q over del T is nothing but the charge current that is flowing in the circuit. So we found that del E over del T 1 over a epsilon naught I. So it means that this charge accumulation is giving, this charge accumulation that is changing with the time, it's giving an electric field, and that electric field is proportional to this charge current. So if we can write I is equal to del E over del T A epsilon naught, okay, and if and again I by A, we can write this as a charge density. So let's say this is a GD, charge density GD. So that will be epsilon naught del E over del T. Now in the Ampere's law, I can write it again. Ampere's law. This was del cross B was mu 0 J. Now we can see there is this was initially this was only the charge current, but this has been modified now. So J will be JC plus JD. So we can write the JC plus JD in the del cross B equation. Del cross B will be mu 0 JC plus plus JD. That means we have mu 0 JC here plus mu 0 JD here. Now इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास अब इक्वेशन जो है ये मॉडिफाई हो गया है, और अगर हम इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जीडी की वैल्यू यहाँ से, तो हमारे पास ये आ जाएगा म्यू जीरो जेसी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, और जेडी की वैल्यू है डेल ई ओवर डेल टी। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि आ, ये जो इक्वेशन है ये इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, क्योंकि यही इक्वेशन ये हमें बताता है कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है टाइम के साथ, वो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड with time induces an magnetic field। तो इसका मतलब यहाँ पर हम फिर अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि अब डॉट प्रोडक्ट का क्या होगा, तो डेल क्रॉस बी यहाँ पर, और दोनों तरफ हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो म्यू जीरो डेल डॉट जे सी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई ओवर डेल टी, देन अगेन डेल डॉट ई। हमें पता है कि ये जीरो होता है, तो हमारे पास आ गया डेल डॉट जे सी इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी और डेल डॉट ई। लेकिन हमें एक एक और चीज पता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से, continuity equation of charges, that del dot jc is equal to plus
plus del rho over del t is equal to 0. This we know because जो जितना चार्ज करंट उस बाहर जा रहा है उतना ही, मतलब जो ये चार्ज के कंजर्वेशन को दिखा रहा है सिंपली, क्योंकि जितना चार्ज बाहर जा रहा है, चार्ज करंट से बाहर जा रहा है वहां पर, उतना ही हमारे पास चार्ज करंट, उतना ही चार्ज हमारे पास अंदर आ रहा है। तो जितना चार्ज एक बाउंड्री से बाहर जा रहा है उतना ही चार्ज अंदर आ रहा है। तो ये हमें पता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, और डेल डॉट ये हमें पता है कि फर्स्ट लॉ से ये होता है एप्सिलॉन रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो था गॉस लॉ से, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है अल्टीमेटली गॉस लॉ ही आ जाता है यहाँ से। डेल डॉट जेसी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी रो। ओके, तो एप्सिलॉन, ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा, रो से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और हमें पास ये इक्वेशन आ जाएगा जो कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को बताता है। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो है और राइट हैंड साइड भी जीरो, तो हमारा ये डिलेमा रिजॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इसके साथ फिर जो न्यू मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन हो जाता है, वो वो हमारा मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से आ जाता है, जहाँ पर हमारा एडिशनल चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। इसके बाद चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने देखा। अब हम पूछ रहे हैं कि हाउ द मैक्सवेल इक्वेशन गिव राइज टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। तो हमने देखा कि हमारे पास, मैं इसको जल्दी से शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास हमें पता है कि जो डेल डॉट ई है, और ये मैक्सवेल्स इक्वेशन है, दो पर एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, एंड डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, एंड del cross B is equal to mu0 J, sorry, zero plus mu0 epsilon 0 del E over del T। अब अगर हम कहें कि यहाँ पर ये जो है ये चार्ज करंट सोर्स है, और यहाँ पर ये चार्जेस, फ्री चार्जेस। तो अगर हम कहें कि हम एक वैक्यूम वैक्यूम में हैं, तो जो रो होगा वो जीरो होगा, और जो जे होगा करंट वो भी जीरो होगा। तो हम जो इसको लिख लेंगे आसानी से, डेल डॉट ई विल बी जीरो, del dot B will be 0, and del cross E will be minus del B over del T, and del cross B will be 0 epsilon 0 del E over del T। अगर हम देख रहे हैं कि हमें ये इक्वेशन पता है, तो हम यहाँ पर अगर दोनों तरफ इन दोनों का कर ले लें, तो हमें जो है इस मैग्नेटिक फील्ड, ओके, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इक्वेशन ऐसा है, 1 और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि डेल क्रॉस ई जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन बी अल्टीमेटली ई पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो उसके लिए हमें दोनों तरफ कर लेना होगा इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 हमारे पास है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। तो अगर हम दोनों तरफ इसमें कर लेंगे, तो ये होगा डेल क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस ऑफ ई एंड माइनस डेल क्रॉस बी ऑफ डेल टी। अच्छा, उसके बाद ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये होता है किसी भी वेक्टर के लिए होता है डेल स्क्वायर ई बाय, ओके, लाइक डेल डॉट ई डेल ऑफ दैट
माइनस डेल स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस बी ओवर डेल टी। तो अभी हमें पता चला कि डेल क्रॉस बी तो ये होता है, तो हम उसको वहां पर रख देंगे, और डेल डॉट ई जीरो है यहाँ से इक्वेशन वन से, तो ये तो जीरो हो गया। तो हमें पता चला माइनस डेल स्क्वायर ई जो होगा होगा माइनस डेल ओवर डेल टी, और इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। तो म्यू जीरो ओवर एप्सिलॉन जीरो ओवर डेल टी, तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा, दोनों दोनों से प्लस हो जाएगा, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो एंड ई। तो ये हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से कुछ आ गया। तो अगर हम इसको वन डायमेंशन में देखें, मतलब जो डेल्टा स्क्वायर है ये वन डायमेंशन में एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी डेल एक्स स्क्वायर होगा, मीन्स द डेरिवेटिव जो ओनली इन एक्स डायरेक्शन, इस तरह से होगा। ये इसका सिमिलैरिटी ले सकते हैं वन डी में, तो वन डी में हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर ई ऑफ दिस वेक्टर इज जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर एंड द ई वेक्टर। नाउ व्हाट यू कैन, चूंकि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो जो होता है वो होता है अंडर रूट, ओके, तो ये होता है वन ओवर सी स्क्वायर के बराबर, मतलब सी बराबर होता है अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ये वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे, ये चूंकि ये वैक्यूम में है तो ये स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर ई इज इक्वल टू वन ओवर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो एक वेव को वेव इक्वेशन है ये, जो एक वेव को दिखाता है कि कैसे एक वेव जनरेट होगी। ये वेव इक्वेशन तक हम आ गए मैक्सवेल इक्वेशन से। तो हमने देखा कि इंडीड जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन द्वारा वेल डिफाइंड है, उससे हम एक वेव इक्वेशन लिख सकते हैं, और यह वेव इक्वेशन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है कि कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं ये एक वेव है और ये कैसे ट्रेवल करती है। तो हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन which of the which of the following function correctly represent a traveling wave equation for a finite value of finite values of displacement and time। तो हमें ये कह रहे हैं कि which of the following functions correctly represents the traveling wave equation और finite value of displacement और time। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसका जो सोल्यूशन आता है, जो अभी हमने मैक्सवेल इक्वेशन से जो हमने वेव इक्वेशन डराइव किया, इसका सोल्यूशन आता है x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू मीन सम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस और प्लस v इंटू टी, वहाँ जहाँ पे v वेव की वेलोसिटी है और t टाइम है। तो मतलब सॉरी v जो वेव की फ्रीक्वेंसी है और मीन्स वेलोसिटी है, और टी टाइम है, सॉरी, तो v is the x माइनस वी टी इज द करेक्ट थिंग टू राइट। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई वेव होगी तो हमें हमने आपने लेक्चर में देखा होगा कि एफ एक्स माइनस वी टी टाइम, तो मान लेते हैं वी कांस्टेंट है तो उसको इग्नोर करते हैं के लिए, तो जो फंक्शन होगा अदरवाइज एक्स और टी के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं एंड इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं एक्स प्लस टी और एक्स माइनस टी। तो एक्स प्लस टी और एक्स माइनस डिफरेंट डिफरेंट वेव इक्वेशन मीन्स वो है एक वेव इक्वेशन, लेकिन उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ पर कास एक्स स्क्वायर साइन टी है, इसको हम एक्स माइनस टी के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो हम इसको भी ये नहीं लिख सकते कि
यह एक वेव ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन है, तो ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन नहीं है। उसी तरह से अगर हम दूसरा देखें, y इज इक्वल टू ई टू पावर टू एक्स साइन टी, तो इसको भी हम टी माइनस एक्स या टी प्लस एक्स के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर हम तीसरे वाले को देखें, जो कि है हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस लॉग एक्स माइनस टी, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है कि डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बी स्क्वायर डेल स्क्वायर, तो यहाँ पर बी हमारा वन है, तो इसको हम नॉर्मलाइज है, सॉरी नॉट नॉर्मलाइज बट टेकन वन फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस कैलकुलेशन। तो डेल स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर जो हमारे पास होगा वाई, वो इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम स्पेशल डेरिवेटिव लेंगे डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वाई, तो ये हमें मिलेगा यहाँ से लॉग है तो वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स हो जाएगा, और इधर लॉग एक्स माइनस वाई तो वन ओवर एक्स माइनस वाई, दैट्स इट। एंड द सेकंड डेरिवेटिव हम जब लेंगे इसका स्पेशल डेरिवेटिव, तो ये होगा फर्स्ट, पहले इस फंक्शन का हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इस बार इसको इस फंक्शन को रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर माइनस टू अपॉन यहाँ पे इन माइनस वन आ जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास माइनस साइन के साथ ये प्लस हो जाएगा और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये इतना है। और इसी तरह से हम अगर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर देखें तो क्या होता है डेल स्क्वायर, सो सबसे पहले हम डेल वाई ओवर डेल टी कैलकुलेट करेंगे, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर square. This should be plus 2 because it's in denominator. If it would have written in the denominator, the numerator, then it could be this would write it as minus 2, but here it's plus 2. Write the plus and not just write this. And now the other one is this. Other one is this 2x. So 2x square is 4x square, and x square minus y square is 4. 2 and whole square. Now there is additional terms x minus y whole square. Now what we are going to do? We are going to calculate the del y over del t, and that is that y is here. So let's copy this, copy it, and first let's paste the y. So let's calculate the del y over del t. So we have first derivative with respect to this. Yeah, I think I lost my connection. Now it's restored. So it will be 1 over x square minus y square into minus 2t. That's it. And other one will be this, and the other one is this. Now this other one will be other one derivative will be
minus y, and this will be minus 1, that makes it plus 1. So it's t, x minus t, sorry, it's not y, it's t everywhere. And then again del y square over del t square will be, first you this one, so it will be x minus t square minus t square. That's it. Now minus 2t will be there. The derivative of this will be x square minus t square minus 2t, and the minus that will come due to this. Okay, so minus 2t, and the minus that is coming from this one, and the minus 2t. And then again, this will be minus 1 over x minus t whole square, and then again there will be minus sign that will come due to this x minus t. Then minus 1. So total it will be minus 2 over x square minus t square minus plus, so it will be minus again 4t square x square minus t square whole square minus minus plus 1 over x minus t whole square. Now we can just take common of x square minus t square, common of them. So what we are left with is this 2x square minus t square minus 4t square and then plus 1. No, no, we can't do this because on this one we'll create a problem. Sorry. So we have to do something different here. So okay, but even going bigger to that, even before that, you can see that it's not y, this all is t. So just just simplify this. Let's say we are going to simplify this one. This one is already here. Let's simplify this one first. So we have in this one 1 over x square minus y square is common. We've taken that, so 2x square minus 2t square, sorry, it's 2t square minus x square, sorry, minus 4x square, and plus 1 over x minus y square. So it is like 1 over x square minus y square whole square into 2 will be common. It will be like minus t square minus x square plus 1 over x minus y square, and then you can x minus t whole square, sorry, this is all t. So now what you can do, alright, so what you can do is uh, we can okay, we will also compare for the this one dy square over del t square. So let's simplify this one also. Same. We'll take this and then we copy this one.
x square minus t square minus minus 2x square plus 4t square, sorry, minus 2t square minus 4t square and 1 over x minus t whole square. So then we can see this is the whole square. So it's nothing but 1 over x square minus t square whole square minus x square minus this and minus t square plus 1 over x minus t. So we can see that del square y over del t square and del square y over del x square. So they are equal 1 over v square, but v is equal to 1 because the function that we are expecting was x minus vt, something like this, y is equal to x minus vt and v is equal to 1. So that's why we are x minus t was this functional type. Now we can see that yes, indeed, the LHS is okay. This LHS is equal to RHS. Here we have proved that. So that means we know that the third one is the correct answer for this one. Now we will go for this next question. So the next question is which of the following equation represents a wave traveling to the right? So there are four equations. One is y y equal to a sine kx plus wt. Second one is y is equal to a sine kx minus wt. Third one is y is equal to a sine kx into sine wt. The fourth one is y is equal to a sine kx minus wt plus a sine kx minus ct. Now we can see first we have to calculate the velocity. So that velocity will give us an idea in which direction the wave is going to travel. So this is the phase of any traveling wave and it's always constant. इसका मतलब हम इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे इस फेज का फाई इज इक्वल टू हमारे पास है के एक्स प्लस डब्ल्यू टी पहले केस के लिए. तो अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमेशा जीरो होता है. तो इसका मतलब ये होगा डेल टाइम दिस के डी एक्स ओवर डी टी और ये होगा ओमेगा तो डी टी ओवर डेल टी इज वन इक्वल टू जीरो. यहाँ से हम देखते हैं कि जो डी एक्स ओवर डी टी है माइनस ओमेगा बाई के है. इसका मतलब ये निगेटिव वेलोसिटी है. यहाँ पर निगेटिव वेलोसिटी है मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है मतलब निगेटिव एक्स में जा रहा है. अगर हम दूसरे केस को लें दूसरे केस में जो फाई हमारे पास है वो है के एक्स माइनस ओमेगा टी. यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि जो डी एक्स ऊपर डी टी आएगा हमारे लिए वो प्लस ओमेगा बाई के होगा. मतलब ये हमारी राइट हैंड साइड में जा रही है मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है. तो सेकंड वाला सही हो गया. थर्ड वाले में हम देखते हैं कि इसमें इसका फॉर्म एक के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में नहीं है और ये इनमें के एक्स और ओमेगा टी सेपरेटली लिखे जा सकते हैं. तो मतलब इनकी जो इसमें जो वेलोसिटी है वो जीरो है. ये एक स्टैंडिंग वेव टाइप का इक्वेशन है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पोजीशन है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है. मतलब अगर उसी पोजीशन के लिए उस गिवन टाइम पर जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा लेकिन ये वेव अपनी जगह से कहीं और नहीं जाएगी. तो ये स्टैंडिंग वेव है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है. इसकी वेलोसिटी जीरो है यहाँ पर. तो इससे या ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है. इसके बाद हमारे पास एक चौथा वाला इक्वेशन है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी एक्स माइनस ओमेगा टी टाइप का है. तो ये भी इसको हम सम कर सकते हैं एक्चुअली.
ए ए साइन एक्स प्लस बी साइन वाई के हिसाब से। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों भी मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी के डायरेक्शन दोनों के लिए के एक्स माइनस ओमेगा टी फेज डिपेंडेंस है। इसका मतलब दोनों प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएंगी क्योंकि डेल एक्स ओवर डेल टी जो है वो प्लस ओमेगा बाई के ही आएगा। तो हमें पता चल गया कि जो ये इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन जो फोर्थ है, these equation second and equation जो fourth है, these show the show the show that traveling wave direction is y direction. Sorry, is in plus x direction. Okay. Now what the next thing? Next thing are here. So we have this one. Now when we go next, we have question number 4. So here what we have been asked is that an alternating charge current is oscillating at frequency omega, I is equal to I naught cos omega t, and in the straight wire, and it returns along the coaxial conductivity. So it's a cylindrical wire. So it's like this. I will show you just in a minute. So it's the one that the current is going up, and this one is the current going down, and this, let's say the radius of for this one is s, the radius is a, and sorry is b, and the other one is the inner wire has a radius of b, and the outer wire has a radius of e as given. So can we calculate the electric field? Okay, so I will share my screen for this. So this is, you can visualize this like this. So here you have a wire that is here, this one, and carrying current I, and then there is a coaxial wire that is taking back the current in the opposite direction. So now the circuit is complete for an oscillating current. Now what will happen? So first you know that at any distance, that let's say we make an amperian loop. So here at this point, the magnetic field, the direction of that DL element. So we can write E dot uh, the radius is S. So the amperian loop is only including this inner current. So it will be like mu zero I enclosed may be I, and it is given by this I naught cos omega t. But for this now we can write V is equal to mu zero I by S, and phi cap direction is like this into the plane, and we can, okay, now this is done. Now if we make a something, some cross section here, the cylinder. Okay, so the field is and the magnetic field is like this. So the electric field that is being used will be perpendicular to this, will be in z direction. So if we include this one E dot dl, Faraday's law, that is nothing but that this induced EMF will be uh, del phi over del t, and the phi is nothing but V dot A. So if this distance is this is at s distance. Okay, so
let's say this distance is variable, and it's the dy distance. So the dy will go from here to here. Okay, and this one is fixed. So this one is let's say L distance. So we have the area in which this magnetic field is perpendicular. So we can calculate the flux phi is equal to mu naught I over 2 pi s. So the distance at okay, we have already said that this distance will be s, right? So we need to name a new thing is s. Now what we can do that we can multiply with the area, and area will be the distance this one. So area strip will be here, and that will be like ds ds into the length is L, and in the case of E dot dl, we can see that this component here, the electric field and the dl are perpendicular. They will can zero. Only this one and this one will be incorporated. So uh, we will have uh, E into L is equal to 0 I over 2 pi s into L. Okay, so we will write pi s L ds, and the here this loop is going from 0 to it's like that, and E dot L is this. Now we have L being cancelled out. So we have mu to I 2 pi and this over S, where S is going from A to where it is going from S to A. So all the way up to here. So we have this electric field E is equal to mu to I 2 pi, and then this ln S that is going from S to A, which is pi 2 pi, and this ln A by S. So this is that, and we have to also, oh, sorry, the derivative is there. So don't forget the derivative. Time derivative is there, on which the negative sign. So don't forget the sign also. It's like this. Time derivative there. So now cos omega t has this differential that is sine omega t minus sign. So like this I naught omega sine omega t, and naught over 2 pi, and then ln a by s. Okay, so this is the electric field in g direction. So we have the electric field, the g direction. Okay, now what we have calculated the electric field EST. So we can let's say verify this. EST is equal to mu 0 I naught omega sine omega t over 2 pi ln a over s in z cap direction. Okay, now let's go to our next question. Our next question is okay. Before going to next question, we should understand what is a Poynting vector. So Poynting vector denotes the flow of energy in a system, and it's given by this cross product of it's a vector. So and it is defined as the cross product of electric field and divided by the uh, and multiplied with the magnetic field and divided by the permeability.
or the medium's permeability. Okay. So now based on this, there is a question number 5. So where it you asked that what is the magnitude of Poynting vector at the surface of a long cylindrical wire of radius r, length L, carrying charge current I, when it ends are kept at the constant potential V. So we know that if there is a wire and there is some potential difference here, that is V, the length is L, the radius is R. So now it is being asked, what is what is the magnitude of the Poynting vector? Poynting vector is nothing but described E cross P over mu naught, and the magnitude we have to take it out. So first, let's understand what is the electric field here. So here we can see that electric field is nothing but the potential difference over the distance. So the of the cylindrical faces. So it is equal to L. But the magnetic field, we know that if it is carrying the current I, so it will be B equal to B dot dl. Dl is this Gaussian surface, that is 2 pi r. So B is equal to 2 pi r. So that will be dot dl is equal to logical mu naught I. So this is this. We know I is, so we can calculate the B from this radial symmetry. So this will be pi r. But the radius is r, not I, and we can be I by r. So this is giving us E is equal to V by L, E is equal to V by R, and by L is z direction, and V naught by R is at any particular point. It is let's say at here y cap direction, x, y, and this is z direction because it will be like this going in B. So it will be y. We can calculate the Poynting vector. Poynting vector will be z cross means E cross B, E cross B not. So you can have as vector by L z curl into I over 2 by R y cap. Then you have this Poynting vector by L I over 2 by R z cross y which minus x. Minus x direction, but it's perpendicular to both this magnetic field that is in y and magnetic field in this. So at any point, so we can calculate, but the magnitude is not going to be on the point, it's constant. So magnitude will be this, x can be one. Magnitude of voltage L I by R of forget the not here. So I so it's like AI equal by RL. So you can see this is the ratio, this is the power, and this is the area. It has watt per area unit, and what is saying that for how much power is there in the in the cylindrical wire, which is stored in electric and magnetic fields. Okay, now let's go to the next question. So uh, next question is the for a Poynting vector, the following or the following are given. A Poynting vector around a point source is a radial. Here only E, theta, and phi are present and are transverse. Only E theta present, only E phi is present. Poynting vector does not exist around a point source.
So what is the point? So also is the point now it's emitting something, some values, some electromagnetic. So it has some k vector, which is k vector. So we can see that it's emitting something. So what we have seen that the direction of this pointing vector is E cross B on 0. But so if something is going out, so the pointing vector actually also is the direction along which this flow is happening. So this is basically S will be it's a radial outward. So S will be a function of R can be R S where this can S can be R S can be R theta phi, but this the dependence on the vector will be R cap. And now since it's fixed in R cap, the only thing that guarantees this that E and B both are perpendicular, but they are not in the direction of R. So E can be like this and B can be also like this, perpendicular to or making some angle with each other. That matter, but they cannot be in the direction of R. If they cannot be in the direction of R, then what's left is the direction of theta and the direction of phi. So E can have this direction dependence. B can have this direction dependence. Okay. So S can have the direction dependence of R. Okay. Now this is the case. So let's go and analyze the question again. यहाँ पर हमें पास है कि for a pointing vector the following are given. Pointing vector around a point source is radial. Obviously it's radial. We can see that. So and there are only E theta and E phi components are present and are transverse. So it's yes the direction of propagation is along k vector, but the magnetic field is along this or perpendicular to this in E theta or E phi. Okay, so theta, this is the phi, and this is the theta. Then this is the radial part. This is the theta. Like this or this. This is the phi, and this is the radial part. So this radial part is pointing to the direction of S. इसका मतलब ये है कि थीटा एंड फाई कंपोनेंट ही होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तभी उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें आर कैप दे पाएगा इसका मतलब जो पहला सोर्स है वो ये बताता है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर अराउंड अ पॉइंट सोर्स इज रेडियल इज ट्रू the there are only E theta and E phi component present and are transfer. That is also three. There is only E theta component present. No, it's not true. There can be presence of E phi component, and if E phi component is present, that is also not guaranteeing that the E theta component will not be present. So C and D are both are wrong. Pointing vector does not exist around a point source. That's so any source that is emitting something will have a pointing vector because it's related to energy and the source is emitting something, so it has some energy. So there will be always a pointing vector. Okay. Now let's go to our next question. So which of the following patterns represents a TEM in transverse electromagnetic wave traveling in positive x direction? So let me show the question. So which of the following field represents means field represents a TEM wave traveling in positive x direction? We have four options. E is equal to A to I cap, comma H is equal to minus 4 Z cap. Second one is this E is equal to minus 2 Y cap, H is equal to minus 3 Z cap. Third one is this E is equal to 2 Z cap, comma H is equal to 2 Y cap. And the fourth one is E is equal to minus 3Y hat and H is equal to 4 Z hat. Now, with this help, we have to check in which
of the following patterns to represent a transverse electromagnetic. So what does it mean by transverse electromagnetic wave in positive x direction? So if some electromagnetic wave that is going traveling in positive x direction and is transverse, that means that the direction of the electric field component will be perpendicular to x. So it will not be in the direction of x. That's why it's called transverse propagation electromagnetic wave. So here the electric field component can be in x or can be, sorry, not cannot be in x, but it can be in y and g direction. Similarly, the magnetic field also will not have any component along the propagation direction, that is in x. So it can have x, only component in y and g. Now we know that previously we have seen that S is equal to E cross P. So hint is here. We can see very easily S is equal to E cross P. So, and this S vector, it represents the direction of the traveling wave. So direction of the traveling wave. So that means you can write this direction of traveling wave using E cross P over mu naught. But let's say mu naught, uh, let's forget for mu naught for now, because we are only interested in the direction in which which of these field components will satisfy this. Okay, so I think I could have understood the problem. Now let's go to the solution.
Okay, so the Pointing vector is S is equal to E cross V over mu naught. So we can have S is equal to E cross V over mu naught. That means each, and that means that S vector, whatever it comes out, should be in X cap direction. This is what it means, that a traveling wave is going in X direction, and a transfer traveling wave is going into X direction. This is what means that Pointing vector should also comes out to be in X direction. So let us check for each cases. So here each in 8 y cap times minus 4 z cap. So y z cap, y cross z cap is x cap, but there is a minus sign. So it's in minus x cap direction. No, not going in x cap. Second one is minus 2y cap, 2 minus 3 z cap, y z cap, y cap cross z cap is positive x cap, and minus minus becomes positive, so 6x cap. So the Pointing vector, yes, it is going plus x direction. And here you have x vector is equal to z cap into to y cap. So z cross y, it's a negative x cap. So it's not going in positive in this one. Minus 3y cap plus 4 into times 4g cap. Positive, but it's due to this negative sign, it will be negative, so it's not going in x direction. So the only thing that is possible is this one, that the E component is minus 2 y cap and Z component is minus 3 z cap. So E vector is this, and E vector is minus 3 z cap. So here you can see that this will be some schematic that we can draw. So if it is x, it is y, it is g. So here the wave is traveling like this, and this, and okay, so let's say you want to represent the wave using the magnetic field first. So the wave is traveling like this, and this thing is in plane. So it's constant. Obviously, it's constant. So it's at the frequency means it is okay. So it's somewhere here. It's like this, minus 2y. Okay, minus 2y. So somewhere this one can extend the minus y, and then again the minus 3z. So somewhere down here. So it will be like this. And its direction is next step. Okay. Now what we want to do? Uh, we want to solve our next question. That is, okay, before solving to next question, so what is the, okay, now we have understood that there is energy in the field. So you have already calculated the energy using this Pointing vector. If you sum it up, so I just showed you that if you see this, this is the power, right? Power per unit time. So that is somehow related to the energy. Now, if there is a energy stored in the field, so so is there a momentum of the field also? Is there any momentum stored in the field? It can be very strange to you, like how a field can store a momentum, but just it can store a momentum, and that is this is given using this, where the momentum h mu 0 epsilon 0 s cap, where s cap is the Pointing vector and d tau is the volume. So in any volume that you can consider, if you calculate the volume integral of s d tau, so whatever the quantity that will come out, it will give you the momentum vector. Sorry, so momentum vector in this volume. So let's say here you have a question 8 is related with that. Here you have a long coaxial cable of length L and consists of an inner conductor radius A and outer conductor radius B. It's connected to a battery at one end with a resistor. So the inner conductor charge, whatever the charge is being carried is lambda,
And the steady current is I to the right, and then again the other one is just opposite. So opposite the charge current. So they are asking what is the electromagnetic momentum stored in the fields. So first of all, for this one, we know that the momentum is related to the field in this fashion: E0 epsilon 0 S cap d tau. So S is the pointing vector, and the pointing vector itself is related with the E cross B upon mu 0. So that means we have to calculate what is the E in the system and the what is the B in the system, and then only we will be able to solve the this momentum. Now we know that the long coaxial cable. Uh, so at S distance, this so let's calculate the E first. So E will be mu 0 over 4 pi. We know that due to a charge density lambda at distance r, the electric field is given this direction, r cap direction, is mu 0 over 4 pi 2 lambda over uh, okay, 2 lambda over r cap. Okay. Now, what is the thing here? Thing is that we can consider in the cylinder of radius A and the cylinder of radius B. We can consider this. So, uh, okay, so we can consider some point around here that is s distance from this center. So E will be mu 0 over 4 pi s s cap. Okay, now the magnetic field. The magnetic field is a simple cause. It's simple Ampere's law. So B dot dl. We know that B each. So consider as Amperian rule like this. So here you will have B dot dl by S and this integral. So okay, let's write it down first. Ampere's law is this B dot dl and by closed. So the only I is enclosed in this one. So okay, this will be like this. So the current is going in the direction, so it will be like this. So it will be like minus 5. So let's write it down. E dot dl. So P comes out due to the symmetry, and dl is nothing but 2 pi s, and mu 0 I is I, and so the B what we are getting is I by s, and phi cap direction can be minus. Okay, it will be minus here because this current is like this and it's coming out like this. And because if you are considering a coordinate system that has phi in this direction, so this is minus phi, and the theta will be like this. Okay, so r theta and then phi cap. Now we have to calculate s is equal to E cross P upon mu 0. So we have the mu 0 over 4 pi 2 lambda over s into mu 0 I over 2 pi s into s minus phi. Sorry, this will be s cap times minus phi cap. So r theta phi. That means if you have this r, then theta, then phi. So s minus phi cap. You can write this as phi cross s cap. That means it will be theta cap. So s will be 0 over 4 pi 2 lambda s square pi. Sorry, this is not on the zero here. Let's write down this.
this h 1 over 2 pi. Then I edited it wrong. Sorry about that. It's not a mu zero. It's not a mu zero. It's epsilon zero that you have to take it. So epsilon zero, epsilon zero, not here. Okay, 1 over 4 pi epsilon zero to lambda over s square. And 0 I over 2 pi into this direction is the theta cap now. So that this is your electric field direction. This is your magnetic field result. This is your S cap direction. So that is in the theta cap direction. So we have this now. This mod of okay. This is that. Now what we can have, we can simplify it further to cancel out this one, and we have this 1 over 2 pi square, so pi square, 2 pi square, uh, mu naught into epsilon naught. Okay, this also contaminated with the mu naught external. So this mu naught will cancel out with this one. Let's forget it. So I and will be like epsilon naught s square, 2 pi square. I okay. So there is a lambda also. So let's write it down here. 1 into lambda s. Oh, sorry, lambda I. This is your thing. This is the Pauling vector. Now what you can do is you integrate the p s multiplied with 0 epsilon 0. Okay. Now you have the following that it will be s into theta. Just just you can this epsilon 0. The volume of the cylinder, you know that it's length L, the radius says two, and okay, so and I over epsilon square over 2 pi square the theta is theta is nothing but what the cylindrical coordinate it's s ds was the cylindrical coordinate. So s d5 is uh, z is we can calculate the volume integral of this s will come out 0 epsilon 0 over epsilon 0 epsilon 0 I into lambda so lambda I over 2 pi square into s will cancel out s and ln s and this z will be l pi will be 2 pi 2 pi will cancel out this 2 pi epsilon will cancel out this over so it will be not lambda into I ln l so and lns this is the momentum jet capital. Okay, now this is this. So the momentum that we have calculated that comes out to be this P cap is comes out to be not lambda I ln S. So it's I. So it's mu naught lambda I L ln S. Okay, and there was this pi. Okay, so this is this. So okay, we have calculated till now. So this 2 pi cancel out this, the pi square term remains, and this is how you calculate the this is the z direction. Now let's go to our next question.
Next question is question number 9. Okay, so again, there is this charge density that has been, okay, so you wondering why there is not the lambda. So you can consider it like this, that lambda h lambda can is giving rise to a potential, right? So if the potential is V, so you can you can get, okay. So what is the capacitance of this this circular plate? So it depends on the 2 pi f. It depends. It's a LNBA that depends on this one, and into the this epsilon naught factor. So you can change this lambda over this thing, because this lambda over length is related to the charge upon length, and then there is we have this LNBA. So you know that we can once you calculate the capacitance of this cylinder, you will have this voltage, and it's just happens so that lambda over 2 pi epsilon naught LNBA each voltage, and so it is I over V. So when you are calculating this when you calculating this momentum, so wherever you get this lambda 0 IL over this all these things, just multiply it with epsilon naught and the other values. So you can simplify it to, you can multiply it with epsilon naught and divide it with epsilon naught. This will be epsilon naught lambda I, and you can also divide it with the 2 and multiply it with 2. So this is how we can do this. Okay, I must have written. Okay, so this is 2 into 2. This is not get totally cancelled out. 4 pi. Please correct this. So there has been a factor of 4 pi here. So it will be 2, and so here it will be, you don't have to multiply with epsilon naught and then say lns, okay, into z cap. But this is the 1 over c square. You can write this I over 2 epsilon naught c square upon lambda lns. So, and uh, this thing, or there is a length also, so you have to multiply. Don't forget this length. So, but this whole thing is the capacitance. That's the capacitance upon the charge. So you can write it like N over C square I into the voltage generated, and then the this is how you can write it. So now we are going to have this question number 9. So in the question number 9, the electric field in an electromagnetic wave is given by each. We have this 56.5 sine omega minus x by c, and this Newton Coulomb universe is the image. So the field intensity of the wave is propagating along x-axis in free space. Free space means mu zero epsilon. The permittivity and permeability are mu zero and epsilon zero, where epsilon zero is given by 8.85 into 10 to the power minus 12, and the speed of light. So in the vacuum, the electromagnetic radiation travels with free space. In the free space or vacuum, the electromagnetic travels with 3 into 10 to the power 8 meters per second. So this we have to calculate the what is the field intensity. So intensity is nothing but the
You have to calculate the half epsilon naught E square into C. This is the intensity that is to be carried out. So half, then you have to multiply with 26.5. Okay, so this amplitude is here. So you can just multiply it like this and then take an average for a long time for sine omega t. And means so, so we have to take out the amplitude. So epsilon naught is being multiplied to 10 to the power minus 12. The C is 3 to 10 to the power 8. And the amplitude square is 56.5 whole square. So this is how you can calculate the intensity. So you can work it out and you can find the intensity. Now we can go to the next question. Next question is so we have been given an intensity. We have been given an intensity of magnetic field. Okay, here you can work it out like this. So we have been given intensity of magnetic field. Uh, First, let us see the question. If the intensity of electric field in a uniform plane electromagnetic wave is given as E equal to minus 3 to 1.6 sine of kz minus omega t in x cap plus 452.4 sine kz of minus omega t in y, then the magnetic field intensity H we have to calculate, but we know that H is related to over mu 0. Okay. So in the field, it's a free space, so we can consider that and mu 0 by given. Now, uh, for that, we can calculate the magnetic field. So magnetic field will be E by C into 10 cos K. So K is what? K is the propagation constant. So what is the direction of propagation? So how you can calculate which direction it is propagating? It's very easy. Just observe the wave function. It's a kz minus omega t, and you can also see that kz minus omega t is a phase phi. Just take the derivative del z over del t. K is the time. Omega del t over del t is one, and this phi never changes, so it's constant, so it's zero. So the del z over del t velocity is omega by k, and this velocity in the z direction, and this comes out to be plus. So this is traveling in plus z direction. So the k vector is z cap. Now you know the k vector, and the n cap vector is for the uh, electric field. So you have the magnetic field that is comes out to be 1 over c, 1 over c, and then where is that electric field amplitude? So just write the electric field and then multiply it with the z cap. Electric field is your minus 301.6 sine j minus omega t x cap plus 452.4 sine j minus omega y cap. Now you have the magnetic field that will be given like C minus 301.6 x into z will be minus y. So it will make this plus, which is 1.6 sine kz minus omega t, which is x into z minus y minus plus y cap, and plus 452.4 sine of kz minus omega y into z cap will be x cap. This is how it been. So here you can see that this is a transverse propagation of the electromagnetic wave, because the k vector is means the is in z direction, means
whatever this propagating it's in z direction, but the magnetic field and the electric field that is coming out. So so this is in x and y cap respectively. And so something like this, and this is something like this. The, the thing is the wave that is traveling is this direction. The amplitude is something like this. So I think okay, so this is how it has been. So our next we have okay, so let me summarize this. So uh, we have calculated the displacement, like we have first seen how the displacement current comes in the Maxwell equation, and how it generates gives us an equation for a plane wave solution, plane wave or traveling wave, and then we have solved some numericals related to that, and then we came to the pointing vector. We have seen what the pointing vector physically means, like what it means, what direction and all, how it related with the electromagnetic field, and what are the possible directions that it can have given the electric and magnetic field. Then we related this electric magnetic field, uh, means this pointing vector with the momentum stored in the electromagnetic field, P. So P is the mechanical momentum that you can feel. So this is how much momentum actually is being transferred from an electromagnetic field to something. So the electromagnetic fields actually store the momentum that we can see from here. And we have also calculated how the electric and magnetic field components are related with each other in the free space or in the different space. So if it is not free space, you can have different relation, but the magnetic and field components can be related like this with the k vector, and always you can get an answer using this formula. So one thing is to notice that here we also seen what is the transverse electromagnetic wave. So transverse electromagnetic wave is that the oscillations that are there in the amplitude, it's in the perpendicular direction. So if this is propagating in z direction, you can see the amplitude that is being changed in the x and y direction, not in the z direction. So it's not changing in z direction, but rather it's oscillating in x and y direction. Okay, like this. So this is what a transverse electromagnetic wave is. With this, I would like to stop this session here. So I will also upload this recording on YouTube where you can watch it later on. And okay, so we will meet at the same time next week. So I want to acknowledge Professor Manoj Kumar Harbula from IIT Kanpur, NPTEL team, and PMRF team, and Department of Physics IIT Kanpur, who has so they they have given me such an opportunity to have this session with all of you. Okay, thank you. Bye. We will meet next week at the same time.